Yes, students, good morning and welcome to today's class. So, how are you? I hope you all are fine. And as you all know that you can see on the screen, it's written chapter number 5, The Happy Prince. So, we are going to start with this chapter. Okay. So, see the Happy Prince. We all know, we have almost known about the conceptualization of the chapter. And we know that it's about a prince that who's known as Happy Prince. Why he's known as Happy Prince, we come to know in this, and he was a kind of person who was always have been very happy and alive, but when he died, he was set high on the pedestal, and from there he can see the ugliness and the misery of the city and how he helped the people and what ultimate his fate was. So all these things are mentioned there, and Happy Prince actually is a beautiful statue of a prince who lived a life of luxury in his palace, and all the people of the palace used to call him Happy Prince. So the Happy Prince was a beautiful statue, and he was covered with gold. He had sapphires for eyes and a ruby in his sword. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? Now, it said कि Happy Prince क्या था? एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टैचू, एंड वो गोल्ड से कवर्ड था, एंड उनकी आईज में सफायर्स थे एंड उनकी स्वॉर्ड में रूबी था. इतना सब कुछ होने के बाद में इज इट सो इजी कि आप अपनी प्रेशियस चीजों से कैन यू पार्ट अवे विद देम सो इजीली? नो, इट्स नॉट पॉसिबल आल्सो. So why did he want to part with all the gold that he had and the precious stone of his? So this is the thing, answers that we are going to get in this chapter. So see, high above the city on a tall column stood the statue of the Happy Prince. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes, he had two bright sapphires, and a large ruby glowed on his sword hilt. Now, high above the city में एकदम high above, on a tall column, वहां पे क्या था? There stood a statue of Happy Prince. यहाँ आप देख सकते हो इस फोटोग्राफ में, there is a tall pillar on that a statue is placed, and this statue is of Happy Prince. He was gilded all over with thin leaves of fine gold, and all over there were क्या था वहां पे? फाइन गोल्ड की थिन leaves. For his eyes he had two bright sapphires. उनकी आंखों में दो bright sapphires थे, and a large red ruby glowed on his sword hilt. और एक बड़ा सा large ruby उनके sword hilt पे था. One night there flew over the city a little swallow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. So now one night what happened? There flew over the city एक large क्या था? Swallow. Now his friends, उनके जो friends थे, they had gone to where? They have gone to the Egypt. वो Egypt चले गए 6 weeks before, but he had stayed behind. लेकिन वो जो swallow था वो वहीं रुका. Then he decided to go to Egypt too, but then उन्होंने decide किया कि उन्हें कहाँ जाना है? Egypt. All day long he flew, and at night time he arrived at the city. All day long वो कहाँ उड़े? Flew, उसने पूरी रात भर, all day long he just flew, and but at night time he just arrived at the city. वो शहर में वापस आई, city आई. Now wanted to have a shelter for the night. कहीं उसको रुकना था. Where shall I put up? He said. I hope the town has made preparations. Where shall I put up? ठीक है, he said. किसने बोला? swallow ने. I hope the town has made preparations. Then he saw the statue on the tall column. फिर उसने वो tall से column पे एक statue देखा. I will put up there, he cried. Now the bird said कि मैं वहां रुकती हूँ जाके उस statue पे. It is a fine position. क्योंकि ये एक बहुत ही क्या है? Fine position. With plenty of fresh air. वहां पे बहुत अच्छी हवा आएगी because it's the topmost part of that city. So all alighted just between the feet of the Happy Prince. So bird आई और दोनों पैरों के बीच में rested on the platform of that statue. I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked round. अब उस bird ने जब आसपास देखा तो it was all around gold because वो gold का statue था Happy Prince का. Now the bird said what? कि मेरे पास तो gold का bedroom है.
So nice golden bedroom I have. And he said softly to himself as he looked around. जब उसने अपने आसपास देखा and prepared to go to sleep and सोने की तैयारी की. But what happened? Something different happened. And what was it? But just as he was putting his head under his wings, एक large drop of water आया and it fell on him. और वो drop of water उसके ऊपर गिर गया. What a curious thing it, right? उसने बोला ये तो बड़ी अजीब सी चीज हो गई. There is not a single cloud in the sky. एक single cloud नहीं है आसमान में. The stars are quite clear and bright. Stars बहुत ही bright और clear and yet it is raining. फिर भी बारिश हो रही है. कैसे? इतना सोचते ही सोचते what happened? Then another drop fell. उतने में एक और drop गिर गई. What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? क्या use है उस statue का? अगर वो रेन को ही नहीं रोक सकता तो. He said, I must look for a good chimney pot. और उन्होंने क्या बोला कि मुझे एक good chimney pot देखना है. And he determined to fly away. और उन्होंने क्या determine किया? And she determined, and the bird determined, swallow actually determined to fly away. But before he had opened his wings, a third drop fell. पर उससे पहले कि वो उड़ने के लिए अपने wings खोलती, another drop, that is the third drop fell. And he looked up, उसने देखा and saw, what did he see? And when he saw up, what did he see? क्या देखा? The eyes of a happy prince were filled with tears. Happy prince की आंखें आंसुओं से भरी हुई. And tears were running down his golden cheeks. और आंसू उनके golden cheeks जो थे वहां से they were rolling down. His face was so beautiful in the moonlight that the swallow was filled with pity. Now the face was so beautiful, face इतना beautiful in the moonlight that वो जो little swallow था ना was filled with pity. वो जो little swallow था it was filled with pity. मतलब उस जो छोटा सा वो जो था swallow जो था उसको बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा लगा. Who are you? He said, I am the happy prince. अब उसने बोला that you are so beautiful, you are full of gold. And what happened? Golden cheeks, tears are rolling down from your eyes. What happened? Just let me know. पहले तो मुझे ये बताओ. Who are you? आप कौन हो? I am happy prince. उसने बोला मैं happy prince हूँ. Why are you weeping? Then asked the swallow. You have quite drenched me. बोलती है ओके तो तुम्हारा नाम happy prince है. So if you are happy prince, अगर आप happy prince हो तो आप क्यों रो रहे हो? तुम तो इतना रो रहे हो that you have quite drenched me. तुमने मुझे पूरा गीला कर दिया है. When I was alive and had a human heart, जब मैं alive था and I had a human heart, answered the statue. Statue ने answer किया. I did not know what tears were. मैं नहीं जानता tears क्या होते थे. For I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. तो उसने क्या बोला? उसने ये कहा कि that when I was alive, जब मैं जिंदा था ना, I also had what? I also had human heart. Now this was the answer given by the statue. Now he says, I did not know what tears were. मैं जब पैलेस में रहता था, my life was so full of luxury that I really did not know कि tension क्या होती है, दुख क्या होता है, sorrow क्या होती है. There was no permission for sorrow allowed to enter to my palace. So my courtiers used to call me the happy prince, and happy indeed I was, and indeed I was happy too. मैं happy था भी. So I lived and so I died. So I lived and so I died. And now I am dead, and they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. And he says, and now that I am dead, उन्होंने मुझे set up कर दिया है here so high that I can see, कि मैं देख सकती हूँ the ugliness and all the misery of my city. I can see the ugliness and I can see all the misery of my country. And though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. Now he says कि मेरा तो जो heart है ना, that is also not a human heart, वो भी leaden heart है, but still it also has emotion. And he says, I cannot choose but weep. So I just cannot choose any other emotion and I have to weep. What? Is he not solid gold? Said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remarks. Now swallow ने जब ये देखा तो what did the swallow said? Swallow said कि क्या? Is he not solid gold? क्या ये solid gold नहीं है? Now the swallow said to himself. He was too polite. वो बहुत polite थी इस मामले में, ठीक है? To make any personal remarks, or anyone.
So far away, continued the statue in low musical voice. Far away in a little street there is a poor house. So they say that far away, and it continued the statue एक low musical voice में स्टेचू ने अपनी बात कही. Far away in a little street एक poor house है, and one of the window is open. उसकी एक विंडो खुली है, and through it और उसमें से I can see a woman seated at a table. और मैं देख रहा हूँ कि एक woman है, वो अपने टेबल पे बैठी है आराम से. Her face is thick, thin and worn. उनका चेहरा बिल्कुल पतला सा, बहुत मुरझाया हुआ. Worn means बहुत थका हुआ, मुरझाया हुआ. And she has coarse red hands, all pricked by the needle, for she is a seamstress. और उनके हाथ हैं coarse, बहुत ही rough hands है, and red कलर के हैं, and they all are pricked. और पूरी जगह जगह पे उनके सुइयां छुपी हुई थी. कहाँ, किस चीज से? Pricked all by the needles. निडल से, बिकॉज शी इज अ सीमस्ट्रेस. वो कौन थी? कपड़े सिलती थी. शी इज डूइंग व्हाट? शी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सैटिन गाउन फॉर द लवलीएस्ट ऑफ क्वींस मेड ऑफ ऑनर. एंड व्हाट इज शी डूइंग? शी इज एम्ब्रॉयडरिंग द गाउन. वो गाउन को एम्ब्रॉयडर कर रही थी. एक सैटिन गाउन था, एंड दैट वाज द लवलीएस्ट ऑफ द गाउन्स. ठीक है, जिसे वो क्या कर रही थी? एम्ब्रॉयडर कर रही थी. एंड फॉर द ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर. और कहाँ से था? वो क्वीन का मेड ऑफ ऑनर का गाउन था जो वो रेडी कर रही थी. टू वेयर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल. जिसको उनको कहाँ पहनना था? नेक्स्ट कोर्ट बॉल में पहनना था. इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. एंड इन अ बेड, एक रूम के कॉर्नर में, हर बॉय, लिटिल बॉय इज लाइंग स्टिल. उनका जो छोटा बच्चा था वो जस्ट लाइंग स्टिल. He has a fever and is asking his mother to give him oranges. उस बच्चे को फीवर था, एंड वो बच्चा अपनी मदर को क्या कह रहा था? उसे ऑरेंज चाहिए खाने के लिए. बट फ्रॉम वेयर द मदर इज टू गेट द ऑरेंजेस? नो, शी कैन नॉट. सो हिज मदर हैज नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर. सो ही इज क्राइंग. उसकी मम्मी के पास उसको देने के लिए कुछ नहीं था एक्सेप्ट द रिवर वाटर. सो दैट इज व्हाई शी इज क्राइंग. Now, swallow, swallow, little swallow, will you not bring her ruby out of my sword hilt? Now, it says, swallow, swallow, little swallow. क्या आप रूबी नहीं लेकर के जाओगी? Out of my sword hilt. My feet are fastened to this pedestal and I cannot move. मेरे तो feet जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे फिक्स कर दिए गए हैं, तो मैं तो नहीं मूव कर सकता, बट तुम तो मूव कर सकते हो ना. मूव करो और जाओ. जाकर के वो ये जो स्वॉर्ड हिल्ट में जो रूबी लगा हुआ है ना, इट्स वेरी प्रेशियस and very costly. So please take this out and give it, go fly out and give it to that lady, so that from the exchange of this ruby she can get some money, and with that money she can get her son treated and also bring oranges for her and thoda sa apni life mein wo changes la sake. So please, will you do this good work for me? Now firstly तो सोलो ने मतलब रिजेक्ट किया उनका ये प्रपोजल, दैट नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस फॉर यू. सो व्हाट शी सेड, व्हाट ही सेड एक्चुअली, द बर्ड सेड आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट. सेड द swallow. swallow ने कहा मेरा इंतजार किया जा रहा है इजिप्ट में. माय फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल. माय फ्रेंड्स आर फ्लाइंग व्हाट? अप एंड डाउन द नाइल रिवर and talking to the large lotus flower, and they are just talking to that large lotus flower. Soon they will go to sleep. और बहुत जल्दी वो लोग सोने चले जाएंगे. Before that I have to go. So the prince asked the swallow कि तुम इतना रुकी हो ना, सिर्फ one night यहाँ पे और रुक जाओ, and please be my messenger. The boy is so thirsty and the mother so sad. He said, वो बच्चा इतना ज़्यादा thirsty था, and the mother was that too sad. He said, ऐसा बोला. So जैसे ही उसने ये बोला, I don't think I like boys, answered the swallow. I want to go to Egypt now. Swallow ने बोला, I don't think कि मुझे boys पसंद है, and that is why I'm not going to do this work for you, and I am going to go to Egypt. But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. It is very cold here, he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger. अब happy prince ये सुनते ही इतना ज़्यादा उदास, इतना दुखी, that the little swallow really felt sorry. और उसने बोला, यहाँ देखो ठंड तो बहुत है, but okay, looking at your face, मैं ना deny नहीं कर पा रही, so I just agree to stay here with you for one night more and be your messenger. Thank you, little swallow, said the prince. Prince ने बोला, thank you, little swallow. The swallow picked out great ruby from the prince's sword and flew away with it in its beak over the roof of the town. Now,
अब आगे क्या हुआ, स्वॉलो ने क्या किया, जस्ट पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंसेस स्वॉर्ड, उस प्रिंस की स्वॉर्ड में से वो रूबी निकाल लिया, एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक, और अपनी चौथ में उसको लेके जस्ट फ्लू अवे ओवर द रूफ ऑफ द टाउन। सो नाउ वो बर्ड क्या कर रहा है, वो बर्ड उस रूबी को लेके वहां से चला गया। He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculptured. He passed by the place and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out of the balcony with her lover. Now, जैसे ही वो कैथेड्रल टावर के पास से निकले, जहाँ पे व्हाइट मार्बल के दो एंजल्स के स्कल्पचर्स लगे हुए थे, he passed by the palace, वो उस पैलेस के पास से निकले, and heard the sound of dancing. वहां पे उनको डांसिंग की आवाज आई। अब जब उन्होंने देखा that who is this dancing, so what they saw, a beautiful girl came on the balcony with her lover. A beautiful सी girl, she just came out in the balcony with her lover, and I hope my beautiful girl came out on the balcony with the lover, and I hope my dress will be ready in time for the state ball. Now she said, word girl ने क्या बोला, आई होप कि स्टेट बॉल डांस पार्टी के समय तक मेरी जो ड्रेस है वो रेडी हो जाए। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, मैंने फ्लावर्स को उस पे एम्ब्रॉयडर करने के लिए ऑर्डर किया है, बट द सीमस्ट्रेस आर सो लेजी, लेकिन ये जो एम्ब्रॉयडरी करने वाली या ये जो टेलर सॉर्ट ऑफ जो पीपल होती है ना, दे सीम सो लेजी, वो इतनी लेजी होती है दैट आई जस्ट डोंट थिंक कि पता नहीं मेरा वर्क टाइम पे आएगा भी या नहीं। सो further he passed over the river and saw the lanterns hanging on the mast of the ship, and at last he came to the poor woman's house and looked in. The boy was tossing feverishly on the bed, and the mother had fallen asleep. She was so tired in, he hopped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. How cool I feel, said the boy. I must be getting better. And he sank into a delicious slumber. So what he did, वो पहले तो एक रिवर के पास से बर्ड उड़ती हुई गई, फिर उसने देखा कुछ एक लालटेन्स थे जो हैंग हो रहे थे ऑन द मास्ट ऑफ द शिप, एंड देन फाइनली एट लास्ट पूरा घूम फिर के द बर्ड रीचेस द पुअर वुमेन्स हाउस एंड जस्ट लुक्ड इन। जब उसने अंदर देखा तो उसने क्या देखा, ऑन द बेड वो जो बच्चा था was feverishly tossing from left to right and right to left, and the mother had fallen asleep, और जो मदर थी was fallen asleep. She was so tired, वो इतनी थकी हुई थी, in he hopped and he flew gently round the bed, and see in that he hopped and laid the great ruby. वो देखा, उसने देखा वो वुमन तो सो रही है, तो उसको कैसे देखती, सो द टेबल ऑन द पर्टिकुलर टेबल जिसपे वो वुमन सो रही थी ना, द बर्ड जस्ट गॉट देयर एंड उसने वो ग्रेट रूबी जो था वो वहां पे रख दिया। वुमन का एक थिम्बल पड़ा था, थिम्बल आप समझते हो जो आप निडल से वर्क करते हो, तो जो आप पहनते हो ना फिंगर्स में, दैट इज बेसिकली थिम्बल होता है, उसके पास में रख दिया। एंड द बर्ड हैप्पीली उस पूरे बेड के इर्द गिर्द उड़ने लगी, खूब पंख उड़ाती हुई। सो उसके जो पंख उड़ रहे थे ना, वो किसका काम कर रहे थे, बॉय को फैनिंग का काम कर रहे थे। एंड बॉय का जो फॉरहेड था विद हिज विंग्स, उसने उनको फैन किया। एंड हाउ कूल आई फील, सेड द बॉय, वो बच्चा क्या बोला, कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मुझे लग रहा है मैं ठीक हो जाऊंगा। एंड ही सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर, और बहुत ऐसा कहते कहते वो एक बहुत ही पीसफुल स्लीप में चले गया, मतलब बहुत अच्छी नींद आ गई उसको। Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. Now then जो swallow थी वो वापस आई happy prince के पास में, और उसने बताया that what all she has done, and it is curious, and he also remarked that but I feel quite warm now, although it is so cold. उसने बोला although इतनी ज़्यादा ठंड है, but now I am feeling quite warm. That is because you have done a good action, said the prince. Prince ने bird को क्या बोला, पता है तुम्हें ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है अच्छी वाली, you are feeling warm, and you know why you are feeling warm, इतना अच्छा तुम्हें क्यों लग रहा है, because you have done a good action. So once you do a good action, good deed का जो result होते हैं, जो effects होते हैं, वो हमेशा good ही होते हैं। And the little swallow began to think and then fell asleep. और little boy भी, वो जो थी bird जो थी swallow, वो एक बार तो सोचने लगी, but then the bird also fell asleep.
थिंकिंग अवे ऑलवेज मेड हिम स्लीपी। और कुछ भी सोचना ना, whenever the swallow is in lost in the thoughts ना, तो उसको हमेशा नींद आ जाती थी। तो ये उनके साथ एक इंसिडेंस होता था, whenever she is in a thoughtful mood तो उनको नींद आ जाती थी। When day broke, he flew down to the river and had a bath. Now जब डे ब्रेक होता था तो वो उड़ करके जाती to the river and वहां पे she used to have a bath. Tonight I go to Egypt, और आज मैं इजिप्ट जाऊं, said the swallow, swallow ने कहा, and he was in high spirit at the prospect. तो उसके बहुत high spirits थी that yes, उसने decide किया that the bird has to go, that means the bird is definitely going. So he visited all the monument and sat a long time on the top of the church steeple. तो वो almost हर monument पे bird उड़ उड़ के rest ले रही थी, but सबसे longer time के लिए the bird perched on the steeple of the church. That is the topmost जो point होता है ना church का, वहां तक वो बैठी। ठीक है, so this is all. यहीं पे इसको आज की क्लास में यही फिनिश करेंगे, and tomorrow hopefully we will complete the chapter.